Good afternoon, sir. Yes, Good afternoon, sir. good afternoon and welcome. Good afternoon. चाबी विसरून गेलो. येते मधुकर प्रभाडात कडून आणते तो बरोबर. So today we will see the most common disease of eye, that is cataract. So cataract and appendix. Cataract, it is the bread and butter for eye surgeons, and appendix, it is the bread and butter for general surgeons. So it is very common disease. Everyone will suffer from cataract. Why the everyone will suffer from cataract? What is the reason? What is the pathology behind that? So the main reason, that is the human tendency. तो क्या होती है ह्यूमन टेंडेंसी? और this disease mostly, the most of the persons will suffer at the age of 40 to 50 years old, 60 years old. At the old age, और कुछ रेयर केसेस होते हैं जो अर्ली एजेस में होते हैं, बट उसके पीछे भी रीजन होता है, पॉजिटिव फैक्टर होता है कि अर्ली एजेस में क्यों कैटरेक्ट आता है. और दैट रीजन इज, आई टोल्ड, ह्यूमन टेंडेंसी. सो जो कॉमन पर्सन्स, मतलब कॉमनली जो लोग कैटरेक्ट से सफर होते हैं, उनके पीछे के जो रीजन है, दैट इज आल्सो अ स्टडी, कॉमनली स्टडी है वो, कि आप देखो कि जैसी एज हो जाता, मतलब अप टू 20, तो सब हमारा जितना भी एनर्जी, जितना भी टाइम, जो भी होता है वो पढ़ाई के लिए होता है. देन आफ्टरवर्ड द एज ऑफ मैरिज, द एज ऑफ अर्निंग, और वो 40, 45, 50 तक चलता है. द मैरिड लाइफ, द फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होता है, एंजॉयमेंट होती है इस लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे बातें इस लाइफ में होती है ना, क्योंकि अर्निंग, गेनिंग, एक्यूमुलेशन, प्रॉपर्टी, बच्चे, फिर बच्चों की शादी. These all things are very enjoyable things, gives very much pleasure. बट जैसे 45, 40, 45, 50 आ जाता है, बच्चों की शादियां हो जाती है, that young parents become now old, that young parents, that is mummy daddy, now become the grandpa grandma. और जैसे ही ये टाइम आ जाता है तो घर में, बिकॉज ऑफ सो मेनी मेंबर्स, तो कहीं तभी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. जो पहले
हस्बैंड वाइफ थे, नाउ अभी दादा दादी बने, तो वो एक मेक को टाइम दे नहीं सकते बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रंस। वो एक मेक को उतना शेयर नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते। फिर कहीं ना कहीं ये सेपरेशन आ जाता है, सेक्सुअल एक्ट में सेपरेशन आ जाता है। कहीं तभी कुछ तभी ऐसे चीजें डिले हो जाती है, कुछ बातें डिले हो जाती है। बात करनी होती है लेकिन उसे उस बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, डिले हो जाता है। सो ऐसे इसमें सबसे मेन कॉमन कॉज दैट इज द विजुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे हस्बैंड का वाइफ की तरफ, वाइफ का हस्बैंड का तरफ, बच्चों से ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विजुअल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कहीं तभी माइंड इन सब चीजों को देखना नहीं चाहता, उसे विजुअलाइज नहीं करना चाहता। दैट्स व्हाई आफ्टरवर्ड ऑन द लेंस सम फॉगी क्लाउडी एरिया अपीयर होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द कैटरेक्ट। So what is cataract? So cataract, that means any opacity of lens or its capsule causing visual impairment is called cataract. It is a cloudy area in the lens of your eye. Cataracts are very common as get older, or sometimes injury changes the tissue that makes up the eye's lens. Proteins and fibers in the lens begin to break down, causing vision to become hazy or cloudy. This is called cataract. Some inherited genetic disorders that cause the other head problems can increase the risk of cataract. So now you can imagine किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। घर में बहू आती है तो सास बहू से जलती है, हस्बैंड को टॉन्ट मारना शुरू हो जाता है कि आप बहू का बहुत लाड प्यार करते हैं, आप बाहर ज्यादा जाते हैं, बाहर क्या है, आप मेरे साथ टाइम ही नहीं देते। कुछ तभी ऐसी चीजें हैं जो माइंड, उसका माइंड वो चीजें देखना नहीं चाहता, विजुलाइज नहीं करना चाहता। और यही वो परसेप्शन होता है, डिल्यूजन होता है, जिसकी वजह से कैटरेक्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बट इट हैपन्स एट द एज ऑफ 40, 50, so it is syphilitic age. So the miasm of cataract is syphilitic, and the layer, because it derived the lens derived from ectoderm. So ectoderm gives rise to psora and syphilis. So most of the degenerative changes occur at this stage. So in lens, there is also the degenerative changes. That's why the cataract, it is syphilitic. You can see here lens with cataract. See the front part, that is cornea, and this is retina. So retina, and you can see light is coming and
ये इस तरह से जाना चाहिए रेटिना पे, बट वो यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैटरेक्ट. So the conflict, the main and major conflict of the cataract, the thinking, the delusions, the perceptions behind the cataract is lens is responsible for eyes focusing power and for fine tuning the vision process. This is the function of lens. So lens of the right eye are controlled from the left of the sensory contracts of, and the lens of the left eye are controlled from the right cortical hemisphere. Hence there is a crossover correlation from brain to organ. So left to right and right to left. So the lens is affected when the conflict is experienced as very intense. Yes. The conflict is experienced as very intense. Afterward, the lens will affect. कुछ तभी इंटेंस, इंटेंस का मतलब है कि ये वहां से आया है, माइंड से. तो इतना वो डिल्यूजन परसेप्शन इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से ये क्लाउडी area appearing on the lens. Degeneration start. So the visual conflict of having lost sight of someone, the visual conflict of having lost sight of someone, मतलब कोई आपके सामने से चले गया ऐसा नहीं, दूर हो गया ऐसा नहीं, साथ में है, पास में है, लेकिन आजकल तो इसके दर्शन दुर्लभ हो गए. मोस्टली दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल सेपरेशन. इतना क्लोज वही हो सकता है. दैट एक्ट इज अ वेरी क्लोज टू माइंड एंड बॉडी. दैट्स वाई कि आजकल मेरे प्रति आपके मन में वो प्यार रहा ही नहीं, मेरे प्रति वो अट्रैक्शन आपके मन में है ही नहीं. Yes. So the visual conflict of having lost sight of someone, for example, of a loved one who has moved away, left or has died, not being allowed to see someone, for example, grandchild, a lover, a friend, a schoolmate, a relative in the hospital, or not wanting to see someone. Get out of my sight. Itna hate, hate is also syphilitic. So itna hate कि एक नजर भी देखना नहीं चाहते. That is the get out of my sight. आपने देखे होंगे कि बहुत से कपल होते हैं जो ओल्ड एज में एक में का इतना गुस्सा करते कि बहुत सी बार ये भी सुनने में आता है कि इतने एज में सेपरेट हो गए. So this is the get out of my sight. The fear of not being able to, not being permitted to see a certain person. माइंड उस पर्सन को देखने की इच्छा ही नहीं रखता, देखना ही नहीं चाहता. दिस इज द hatred. Hatred, it is the reaction. You can take this rubric also while prescribing for cataract. Indifference or indifference to loved one, close one, dear one, a strange feeling.
isolated feeling, neglected feeling, deserted feeling. These are the rubrics for cat. तो यही ओल्ड एज में है, और एक्सीडेंटली अगर कम एज में, यंग एज में अगर किसी को कैटरैक्ट होता है, इंटेंस वहां पे कुछ ना कुछ हुआ है, इंटेंसिवली कुछ तभी माइंड में चल रहा था, वो हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है। तो ऐसे क्या, ऐसा कौन है जिसको आप देखना नहीं चाहते, या फिर ऐसा कौन है जिसे आप देखना चाहते लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। यस, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमें निकालना होता है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट फॉर लेंस कैटरैक्ट। तो ये फाइंड आउट करना है पेशेंट की हिस्ट्री से कि ऐसा क्या हुआ। एक्सीडेंटली, क्योंकि एक वन ऑफ द रीजन इज एक्सीडेंट और इंजरी। इंजरी की वजह से भी आईसाइट कैटरैक्ट हो सकता है इन अर्ली एज। तो वही लेंस को क्यों इंजरी हुई, क्यों वहां कैटरैक्ट डेवलप हुआ। इंजरी इट इज सेकेंडरी, बट उसके पहले माइंड में परसेप्शन आया जिसकी वजह से वहां इंजरी हुई और कैटरैक्ट डेवलप हुआ। तो वो परसेप्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से जो भी पॉजिटिव फैक्टर होता है बहुत इंटेंस होता है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज सिम्पलेटिक कॉन्फ्लिक्ट। एक बच्चा मेरे पास था जिसकी ट्रीटमेंट किसी अ, मतलब और इसके लिए चालू थी, जिसके लिए, लेकिन कुछ महीने बाद उसे धीरे धीरे कैटरैक्ट डेवलप होना शुरू हो गया था। तो मतलब रीजन इतना इंटेंस हो सकता है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम गोइंग रॉन्ग, क्योंकि जिस मतलब उसे एक्चुअली उस बच्चे को डिसेंट्री का प्रॉब्लम था, क्रॉनिक डिसेंट्री। और मैं उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहा था। डिसेंट्री तो काफ़ी अच्छी हो गई थी, मतलब उसे लूज मोशन, जो कंटिन्यूस एब्डोमिनल पेन था, वो कम्प्लीटली चले गया था। तो मुझे लगा जब उन्होंने डायग्नोस किया, उसे पहले चश्मा लगा कि बोर्ड पे का दिख रहा नहीं, बहुत मतलब ब्लड विजन आना शुरू हो गई थी। फिर आंखें चेक की, चश्मा लगाया। मतलब बाद में पता चला कि कैटरैक्ट हो रहा है, कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका सर्जरी इस वक्त पर है नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं सपरेशन हो गया, क्योंकि सपरेशन की वजह से हो सकता है कि पेशेंट गोइंग टुवर्ड्स द सिपिलिटिक। बट जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तब उन्होंने आँख के लिए कुछ भी नहीं बताया था। खाली इतना बोला था, मतलब जब रीटेस्ट टेकिंग किया तब इतना बोला कि हाँ, तब इसे थोड़ा सा देखने में, बोर्ड पे का देखने में प्रॉब्लम जाता था, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ही स्कॉलर चाइल्ड था, बहुत ही मतलब होशियार इंटेलिजेंट चाइल्ड था। तो उनको, पेरेंट्स को ऐसा लगा कि शायद वो उनके स्कूल में मतलब ऐसी सिस्टम थी कि
आप पहले फर्स्ट रो पे बैठेंगे, उसके बाद सेकंड रो पे, फिर थर्ड रो पे, फिर फोर्थ रो पे, फिर ऐसा एक एक रो आप पीछे जाएंगे, फिर अगेन सामने, फिर अगेन वो साइकिल शुरू। तो इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट उस स्कूल में थी। तो उनको ऐसा लगा कि ये जब पीछे थोड़ा सा बीच में और उसका धीरे धीरे जैसे पीछे जाता है तो ये कंप्लेंट करता है कि मुझे दिखता नहीं। तो टीचर को ऐसा लगा कि इसको पीछे बैठना जान पे आता है, इसे सामने ही चाहिए। इसलिए उन्होंने इस ऐसा सोचा, पेरेंट्स ने भी ऐसा सोचा, क्योंकि पेरेंट्स ने टीचर को बोला तो टीचर ने उनको यही बोला कि नहीं, तुम्हारा बच्चा पीछे बैठना नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा बोलता है। इसलिए बोले हमने आपको ये बात बताई नहीं कि ये कुछ नाटक करता होगा। दैट मीन्स बिफोर आवर ट्रीटमेंट इट वॉज स्टार्टेड। सो ये क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो इसके पहले वो किसी और स्कूल में था, वहां से उसको निकाल के ये स्कूल में डाला था। तो वहां से फिर ये पहले हिस्ट्री में बताया नहीं कि इसकी स्कूल चेंज हुई, ये हुआ, वहां से क्यों निकाला। फिर जब ये कैटरेक्ट सामने आया, मैंने रीटेक किया, तब ये सब बातें सामने आई। तब मैंने पूछा कि उस स्कूल से क्यों निकाला, क्यों उसको इधर शिफ्ट किया। तो अचानक बोले इस ये मतलब वहां तक शायद फोर्थ स्टैंडर्ड तक वो स्कूल में था। तो मतलब नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, उसके बाद फोर्थ स्टैंडर्ड तक वो स्कूल में था। फिर अचानक बोले ये स्कूल में जाना, इसका इंटरेस्ट कम हो गया और स्कूल में मतलब जाना ही नहीं चाहता था। बहुत फोर्सफुली इसको स्कूल में भेजना पड़ता था, मार के भेजना पड़ता था। रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि थर्ड तक जो इसकी टीचर थी, वो टीचर इसका बहुत ही लाड़ प्यार करती थी। इसको बहुत ही अ, मतलब एक फेवरेट स्टूडेंट करके उसको ट्रीट करती थी, क्योंकि ये था ही बहुत अच्छा, बहुत होशियार लड़का था, इंटेलिजेंट था, हमेशा फर्स्ट आना उसका फोर्थ तक। तो वो टीचर बाद में लोअर केजी को चली गई। तो वो, क्योंकि वो लोअर केजी से फिर और वो अपर, बाद में वो ऐसे फोर्थ तक आने वाली थी। तो वो टीचर जाने के बाद इसे दूसरी टीचर मिली, क्लास टीचर। तो वो टीचर इसका उतना लाड़ प्यार नहीं करती थी। इसको जो वो टीचर ने इसकी जो इमेज बनाई थी क्लास में, वो टीचर इससे वो उस तरीके से देखती ही नहीं थी। फिर इससे कुछ गलती हुई तो इसको डांटना, मारना। तो उसके मन में इतना डर आ गया था वो टीचर के लिए, और एक हेट्रेड फीलिंग। वो उस टीचर को देखना ही नहीं चाहता, वो उस टीचर की क्लास में बैठना ही नहीं चाहता था। दैट वाज फियर एंड हेट्रेड, एवर्जन, बिकॉज ऑफ disrespect, because of lack of appreciation, neglected feeling। और उसकी जो पोजीशन थी वो चली गई। and afterward that cataract become mature। दिस इज सिपिलिटी। कैटरेक्ट अर्ली एज में होना भी सिपिलिटी। सो दिस वाज केस। यस डॉक्टर नैना, आपने हाथ राइज किया था। हाँ 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 सर। जैसे आपने वो उसको लूज मोशन के लिए किया था तो सेकंड लेयर थी बराबर। जी। सेकंड लेयर से वो फर्स्ट लेयर पे आई ना। पर वो सिफिलिटिक हुआ इसलिए वो रॉन्ग डायरेक्शन में गया ऐसा। यस, मुझे ऐसा लगा कि आ, मतलब क्योंकि लेयर तो चेंज हुई ना, अमेबियासिस फर्स्ट उसे लेयर पे था, आई। क्रॉनिक अमेबियासिस था, उस पर से हाँ कैटरेक्ट डेवलप हुआ, इट इज सिपिलिटी।
बट उसकी स्टार्टिंग उसे पहले से ही थी, ये बाद में पता चला, क्योंकि तब उन्होंने उस बात को इतना फोकस नहीं किया था। यस। अच्छा अच्छा। पर ऐसा यदि देखे सर कि सेकंड लेयर से फर्स्ट लेयर पे आया, सेकंड पे साइकोटिक है और फर्स्ट पे सिफिलिटिक में फर्स्ट आया, लेयर तो पे ये आना रॉन्ग, चाहिए, लेकिन सोरा में, नॉट सिफिलिटिक आया तो रॉन्ग सिफिलिटिक। हुआ, यानी मेडिसिन इज रॉन्ग देन। यस। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो समझ में आया? कैटरैक्ट, दिस इज द विजुअल कॉन्फ्लिक्ट। यस। सर जरा आप वो केस के रूब्रिक बताएंगे तो हमको थोड़ा याद रहने में थोड़ा सा मदद होगा उसका। तो आप प्लीज उसके थोड़े से रूब्रिक बताएंगे तो इसके साथ रूब्रिक भी कुछ हो जाएंगे। उसमें रूब्रिक था हैट्रेड एंड निग्लेक्टेड फीलिंग। तो टीचर उसे निग्लेक्ट कर रही थी, ऐसा उसे परसेप्शन हुआ। और फियर ऑफ टीचर। यस, फियर ऑफ टीचर। So elements from fear, fright, hatred and neglected feeling. Remedy मत पूछना. Okay? Yes. So next is ptosis. Ptosis, it is a drooping of eyelid, falling of eyelid, unilateral or bilateral, due to weakness of muscle. So only weakness, it is psychotic. But if it is because of paralysis of muscle, then it is syphilitic. So sometimes it can cause amblyopia, that is lazy eye, or astigmatism, that is vision blurred or distorted. It is important to treat it, notice at a younger age. If left untreated, it could affect vision development. Yes, the condition is more commonly acquired later in life. So the ptosis, it is because of two muscles. One, levator palpebral muscle, when it gets affected, then upper eyelid drop, and it is developed from mesoderm. So the third layer, mesoderm connective tissue, and it is syphilitic. Why syphilitic? Because of, if it is because of paralysis, then it is syphilitic, and weakness and decreased tone in muscle, it is psychotic. So upper eyelid के लिए levator palpebral muscles, and the conflict of this condition is not being able to keep the eye open because of extreme fatigue. Not being able to keep the eye open. ऐसा हमें कब लगता है कि आंखें बंद करके बैठ जाना, आंखें खोलना ही नहीं? ऐसा कब महसूस होता है, कब फील होता है ऐसा कि काश मैं आंखें क्लोज करके बैठ जाऊं थोड़ी देर, मैं आंखें ही ना खोलूं? जब when the eye tired, severely tired, है ना? Why? Because of extreme fatigue, working night shifts or not, है ना? बहुत से स्टूडेंट रात में
रात भर पढ़ाई करते हैं। बहुत से जो वर्कर्स होते हैं कंपनीज में रात भर नाइट शिफ्ट करते हैं, रात भर कंटिन्यूस उनके आंखों का ही काम होता है। जो आजकल तो ये फैशन हो गया है कि बहुत सारे इंजीनियर्स बच्चे नाइट में ही वर्क करते हैं, जो मोस्टली फॉरेन कंपनीज में जॉब पे है। तो इंडियन टाइमिंग और उनके टाइमिंग में काफी डिफरेंस होने की वजह से उनका डे तो अपनी नाइट होती है, इसलिए होल नाइट दे वर्क। और वर्क कौन सा? ब्रेन एंड आईज, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे देखना। और ये जब होता है उसके बाद this perception comes, not being able to keep the eyes open, or not having kept the eye open, not being allowed to keep the eyes open, not wanting to keep the eyes open. So this is the conflict. Wanting to avoid seeing something distressing. आंखों के सामने ऐसा कुछ होना जो हम देखना ही नहीं चाहते, कुछ तभी डिस्ट्रेसिंग। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे ऑफिस में ऐसा चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब घर पे यहाँ से ऑफिस से निकल जाऊँ, है ना। मैं वो कंडीशन, वो सिचुएशन, वो जो भी ऑफिस में चलता है वो मैं बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता। आफ्टर वर्ड, क्योंकि जो हो रहा है वो माइंड को डिस्ट्रेसिंग है, माइंड को कहीं तभी वो टॉर्चर कर रहा है और उसकी वजह से वो परसेप्शन आ रहा है कि मैं ये देखना नहीं चाहता। Then the eye muscles become weak or paralyzed and drooping start. So wanting to avoid seeing something distressing. तो डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड ऑन साइड, है ना। सो इसीलिए नोट दिया, वेदर द लेवेटर मसल ऑफ द राइट और लेफ्ट eyelid is affected is determined by a person handedness। राइट की है तो फिर पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, फादर, बॉस, बिजनेसमैन, मनी, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेफ्ट आए तो चिल्ड्रन, जूनियर्स, होम, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इनसे रिलेटेड। एंड वेदर द कॉन्फ्लिक्ट इज मदर, चाइल्ड और पार्टनर रिलेटेड। तो इन पर्सन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हो रही जो मैं नहीं देखना चाहता। मैं, मेरे आंखें इन बातों को, इन चीजों को टॉलरेट ही नहीं कर पा रही। That's why the mind want to close the eyes. Yes. So this is the ptosis of upper eyelid. Now the ptosis of lower eyelid, that is orbicularis oculi muscle affected. This is again the mesoderm. Miasm is syphilitic. And the conflict of upper eyelid is not being able to close the eyes to avoid seeing something unpleasant or undesirable. To avoid seeing something unpleasant and undesirable. Wanting to turn a blind eye. Yes. बहुत से लोग कुछ ऐसे डिस्ट्रेसिंग है, अनप्लीजेंट है, तो फट से अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ से देखना नहीं चाहिए। एंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। और धीरे धीरे फिर दैट मसल्स गेट अफेक्टेड एंड बिकम वीक
afterward the eyelid goes down. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा आंखों के सामने हो रहा है जो मैं मतलब नॉर्मल आई से भी ज्यादा देखना चाहता हूं. सो आई बिकम ब्रॉड ओपन. दैट्स व्हाई द eyelids goes down. Lower eyelids goes down. कि मेरे आंखों से ये मिस ही नहीं होना चाहिए, मेरे आंखों के सामने से ये दूर ही नहीं होना चाहिए. Always keep eyes open. This is also the one of the reason for lower eyelid dropping. Yes. So wanting to turn a blind eye, not being allowed to close the eyes, not being allowed to close the eyes. माइंड वो परमिशन ही नहीं दे रहा है. माइंड से वो ऐसा परसेप्शन आ रहा है, देखना, आंख बंद नहीं करना. यस, आंख बंद करे आपका मिस हो जाएगा. जो मोस्टली जो सस्पिशियस होते हैं, जो सस्पिशियस स्पाउस होते हैं, अगर किसी वाइफ को हस्बैंड पे शक है तो हरदम वो उसके पीछे पड़ी हुई रहेगी. किसी हस्बैंड को वाइफ पे शक है तो हरदम उसके पीछे पड़े हुआ रहेगा, ये कहाँ जा रही है ना, कि एक मोमेंट, एक क्षण भी वो उसे मिस नहीं करना चाहता. हरदम वॉच. So not being permitted to sleep or not getting enough sleep. For example, mothers with newborn, student working on last minute term papers. Yes, इन बच्चों में भी होता है, इन मदर्स में भी होता है. जो मदर्स फीडिंग पे है तो रात भर बच्चे सोने नहीं देते, तो इसलिए, या फिर जो बहुत ही केयरिंग मदर होते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा भी रोना नहीं चाहिए, उसका थोड़ा सा भी आवाज नहीं आना चाहिए, बहुत ही केयरफुल, बहुत ही वॉचिंग, कंटिन्यूअस. तो रात भर सोएंगे नहीं, लाइक दिस. जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक पेपर की पढ़ाई करते हैं कि एक भी क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने से छूट नहीं जाने को होना. बोलते हैं ना, आंखों में तेल डाल के. दिस इज वन ऑफ द रीजन. शिफ्ट वर्कर्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर, यस, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ड्राइविंग करते हैं, मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर रात दिन वो गाड़ी चलाते हैं, तो आंखें थक जाती है. आंखें थक रही है लेकिन माइंड क्या अलर्ट दे रहा है, नहीं सामने देखो, कुछ अचानक आ जाएगा, है ना. इसलिए वो आंखें बड़े करके, कोई कुछ बीच में नहीं आने को ना, हम कंटिन्यूसली चलते रहने को. So this is the reason. Not wanting to close the eyes. For example, kids refusing the nap. Again, the affections determined by the person's handedness. Right का है तो फिर, और left का है तो फिर, like this. So this is the ptosis. Yes, if you want to something on ptosis, you can ask. Yes, if you have any query, question, you can ask. सर जब ये देखना चाहते हैं, जब ज्यादा देखना चाहते हैं तो फिर उसमें क्यों टॉसिस होना चाहिए? आप क्लोज नहीं होने को होना. तो टॉसिस में तो डाउन हो जाती है ना, उल्टा मतलब क्लोज होने की तरफ तो जाती डाउन है. अपर होगी ना, और जो लोअर है वो लोअर डाउन हो आईलिड. गई तो आई ब्राइड ओपन होगी ना. यस, ब्रॉड हम्म. ओपन होगी आई, तो कुछ भी मिस नहीं हम्म. होने को होना. हम्म. यस. ओके, नाउ द lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus
It is a group of glands, sacs and ducts that makes new tear and drains old ones away. तो नए टीयर्स जो होते हैं उसे स्टोर करना और जो पुराने उसे निकाल देना, ड्रेन करना. दिस इज अ ग्रुप ऑफ ग्लैंड, डक्ट एंड सैक. Now you can see in diagram lacrimal gland, lacrimal duct, lacrimal sac. Yes, this is lacrimal sac, this is lacrimal duct, and this is lacrimal duct. Yes. Okay. So it is made up from ectoderm. So the miasm is sora and syphilis. Most of the abnormalities of this apparatus is abnormalities of lacrimal gland are defect in drainage system, dry eye syndrome, for example, excessive or less tear secretion, and dacryodentitis. The conflict for lacrimal apparatus, it is depend on side. So right tear gland, it is ingoing morsel. Not being able to catch a visual morsel because the morsel was ignored by someone else. मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, मुझे जो मिलना चाहिए वो कहीं मिल ही नहीं रहा, किसी से मिल ही नहीं रहा, कोई तभी अवॉइड कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है. That's why it is a visual morsel, not being able to catch. So a child, for example, a child has set eyes on a toy. आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे हमारे पीछे पड़े हुए रहते हैं, है ना, कि पप्पा ये ला के दो, पप्पा ये ला के दो, बार बार याद दिलाएंगे क्योंकि उन्होंने वो कहीं तक भी देखे हुआ रहता है, किसी फ्रेंड के पास देखा हुआ रहता है, किसी दुकान में देखा हुआ रहता है और उनकी नजर उस पर गड़ी होती है, मुझे ये चाहिए. फिर वो बार बार हमें बताएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन हम अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. Afterward, the child suffered with the lacrimal apparatus problem. So a child has set eyes on a toy and expect to get it, but the parents ignore it. Hence, it could not grab the visual morsel. It could not grab the visual morsels. So a child wants to see his friends or wants to watch TV, but the parents don't allow. आप देखो अभी बहुत से प्रॉब्लम सामने आ रहे बच्चों में कि आंखों से कम दिख रहा है, आंखों में पानी आता है, आंखों में जलन होती है, आईज बिकम ड्राई, नंबर बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि मोबाइल देखते थे, कंटिन्यू मोबाइल देखते थे और अभी पेरेंट्स ने मोबाइल देखना बंद कर दिया, स्ट्रिक्ट हो गए, मोबाइल ले लिया, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट. दिस इज द रीजन, not being able to catch a visual morsel. Yes. So a woman, yes, लेडीज के बारे में भी ऐसा ही होता है. एक आधी लेडी होती है जिसे कुछ चीज पसंद आती है किसी शॉप में, ज्वेलरी बोलो, ड्रेस बोलो, साड़ी बोलो, और वो बहुत इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन, बिकॉज ऑफ नॉट द गुड रिलेशनशिप विथ हस्बैंड और फैमिली मेंबर, शी डोंट गेट इट, शी कैनॉट गेट इट. Afterward, these problems start. Yes.
So a woman draw her husband's attention to a ring in the window of a jewelry shop and anticipates getting the ring. ना ऐसी उसकी इच्छा होती है, एंटिसिपेशन, बट इट इज ग्रेड, but she disregards the visual morsel she desires. So this is the perception, this is the delusion. तो मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, मुझे जो चाहिए वो दे ही नहीं रहे, मुझे जो चाहिए, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मुझे मिलता ही नहीं. Yes. So this is the lacrimal apparatus conflict. Now the left ear gland. लेफ्ट ईयर ग्लैंड के लिए क्या है, जो राइट ईयर ग्लैंड के लिए क्या था, नॉट बीइंग एबल टू कैच. नाउ फॉर लेफ्ट, नॉट बीइंग एबल टू इलिमिनेट, not being able to eliminate a visual morsel because the morsel was ignored by someone. For example, a painter wants to sell his paintings, but no one takes notice of them. A real estate agent is unable to sell a property. A salesman is left with his product. A person wants to get rid of morsel at a garage sale, but no one shows up due to cancellation. A lecturer is unable to share his presentation. A child shows its mother a drawing, but she pays no attention. These are the things behind this conflict, not being able to eliminate. बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि हर चीज वो पेरेंट्स को दिखाने चाहते हैं, हर चीज वो अपने टीचर को दिखाने चाहते हैं, लेकिन हम देखते नहीं, टीचर देखती नहीं, टीचर अवॉइड करती है, बाद में दिखाना है ना. एंड दैट चाइल्ड सफर फ्रॉम द lacrimal apparatus problem, dry eyes, dacryoadenoids, yes, swelling in the lacrimal glands, like this. So this is the conflict for left ear gland. So not being able to catch for right side, and not being able to eliminate it is for left side. Yes. Now the dacryocystitis. It is acute or chronic inflammation of lacrimal sac. It is from ectoderm. So the miasm is sorosyphilitic चाहिए. Yes. Miasm is sorosyphilitic. Conflict. Dacryocystitis के लिए conflict है tear gland. टीयर ग्लैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था वही कॉन्फ्लिक्ट है डैक्रियोसिस्टाइटिस का. तो टीयर ग्लैंड के लिए हमने क्या कॉन्फ्लिक्ट देखा था, क्या कॉन्फ्लिक्ट है टीयर ग्लैंड का? यस, समवन है. यस, यस, प्लीज मेक सम नॉइज. Ignored by someone. Ignored by someone else, depends on the side. राइट साइड होगा तो सीनियर मोस्ट, लेफ्ट साइड होगा तो हमारे क्लोज जो ब्लड रिलेटेड होते हैं, जूनियर्स. सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट फॉर tear gland and dacryocystitis. Yes.
So this is finish our conflicts of eye. आई के इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आईज का निकालना इजी है। तो इसे प्रैक्टिस में लाओ, इसे अप्लाई करना सीखो। किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से हमें फीलिंग्स, पेशेंट के अटैचमेंट, देन द मेंटल इमोशनल फैक्टर्स, देन हिज रिएक्शंस, देन डिस्पोजिशंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिल्यूजन। डिल्यूजन, तो हमें ये सब देखना है, रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है और मेडिसिन निकालना है, लेकिन हर चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट देखना जरूरी है। ओके, तो इस पे अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, यस। आज बहुत सभी लोग शांत थे। ये बहुत अच्छी तरह से समझ गया या फिर कुछ समझा ही नहीं, या फिर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस? थोड़ा हेवी हो गया सर। आगे इससे भी हेवी है। आगे इससे भी ज्यादा हेवी है। कंजंक्टिविटीज और डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, उसका ये लैक्रिमल डक्ट का कॉन्फ्लिक्ट। सेम कॉन्सेप्ट यस, है सर। कॉमन डिस्चार्जेस ऑफ आई जो रहते हैं ना, लाइक सडनली मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्जेस होते हैं, तो वो भी सेम है कॉन्फ्लिक्ट कि दैट इज क्योंकि उसके लिए तो आई ड्रॉप वगैरह देते हैं ना, होता है आई इन्फेक्शन करते, तो वो कोई उसकी कुछ सेम कॉन्फ्लिक्ट। बोलना चाह रहा है क्या? हेलो, हाँ सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है कुछ भी। कुछ पूछना है, बताना है, बोलना है तो थोड़ा सा स्पीकर साउंड बढ़ाइए। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी, क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लोज कर देते हैं। यस, सर रेटाइना का बाद में लेंगे क्या? यस। रेटाइना डिटैचमेंट ऑफ रेटाइना हो गया। हाँ, हुआ ना। सर वो दिन थोड़ा नेटवर्क नहीं था, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेटाइना अगर वो दिन हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं आया था ना, तो उसके बारे में तो इसलिए अगर रिकॉर्डिंग डाल दे तो ठीक है, हम लोग वहाँ से पढ़ लेंगे सर। ओके, सो शुड आई
Closed. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इसे पढ़ो, अच्छी तरह से समझ लो, फिर क्वेश्चन पूछना। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir.